Good morning students, hi friends, very good morning to you all. Today we are going to start with the new subject, that is Code of Criminal Procedure, or first video on the topic Bailable and Non-Bailable Offences. Right? Already we have done number of videos in the Evidence Act, right? उसका सीरीज, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए KDCOM चैनल को, so that it reaches number of students and friends like you. Okay, so let's start bailable and non-bailable offences. Now, सबसे पहले the offences and the punishment have been given under Indian Penal Code 1860, and the procedure for the same has been given in the Code of Criminal Procedure, that is 1973. So under CRPC, the offences have been mainly classified under two heads, right? That is bailable and non-bailable. ये bailable क्या होता है, non-bailable क्या होता है? Offense किसको बोलते हैं? Offense अगर आप किसी को भी हानि या तो किसी को हर्ट करते हो सामने वाले को, या तो कुछ ऐसा काम करते हो जो पूरे सोसाइटी और कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, राइट, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑफेंस. अब इस ऑफेंस को दो तरह में बांटा गया है. इफ़ इट इज़ वेरी हेनियस ऑफेंस, मतलब वेरी सीरियस ऑफेंस, और नॉन सीरियस ऑफेंस, राइट. सो इसलिए इसको बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बांट दिया गया है. नाउ डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस. Section 2A of CRPC defines bailable offences as the offence that has been shown in the first schedule as bailable or which is made bailable by any other law for the time being in force, right. Bailable मतलब आपको तुरंत बेल मिल जाता है, या तो फिर आपको फ्रीडम मिल जाता है. आपको पुलिस ऑफिसर स्टेशन ले जाते हैं, फिर अगर उन्होंने देखा कि ये जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पे पुलिस ऑफिसर, आपको कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं, तो टर्म्स एंड कंडीशन पे पुलिस ऑफिसर आपको छोड़ देते हैं. और दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या एडवोकेट के लिए हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको काम आएगा, राइट. तो जस्ट वॉच इट फुल. As per the last item of the first schedule, an offence in order to be bailable would have to be an offence which is either punishable with imprisonment for less than 3 years or with fine only. देखिए, वो है bailable. Bailable offences का सारा जो भी जितने भी offences है सबको almost they come under below 3 years punishment और fine penalty से छूट जाते हैं. तो examples ले लेते हैं. Simple hurt, section 337, bribery, public nuisance, death by rash or negligence act, they all come under bailable offense. Now, right to be released on bail. What is the thing? सबसे पहले तो देखो, आपको अगर कोई ले जाते हैं और वो बेलेबल है तो वो आपका हक होता है बेल पे छूटने का, राइट. दैट इज कॉल्ड राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. एज पर सेक्शन 50 ऑफ CRPC, whenever a person is arrested without warrant, it is the duty of the police officer to communicate the full detail of the offence for which the person is arrested. This is very important. Now, also if the offence for which the person is arrested is a bailable one, it is the duty of the police to inform that he is entitled to be released on bail after giving surety. So this all things are informed by the police officer, right. यहाँ तो सबसे पहले तो वारंट होना चाहिए. अगर वारंट नहीं है तो पुलिस ऑफिसर आपको सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए कि किस बेस पे आपको अरेस्ट किया गया या तो थाने पे लेके आया गया, राइट. नाउ एज पर सेक्शन 436 of CRPC, whenever a person accused of a bailable offence is arrested without warrant and is prepared to give bail, such person shall be released on bail, right. And if a person or accused is ready to give bail, right, so then he must be or he shall be released on bail. The discretion to decide the bail amount is with the court और विद द ऑफिसर. ये दोनों के पास है डिस्क्रिप्शन, और ज़्यादातर तो वो पुलिस स्टेशन से ही, पुलिस ऑफिसर की तरफ से ही वो श्योरिटी या तो फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे बेल मिल जाता है, राइट. दैट इज़ द केस. नाउ
एग्जाम्पल, एक केस लॉ ले लेते हैं. इन द केस ऑफ रसिकलाल वर्सेस किशोर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केस अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर any bailable offence, his right to claim bail is absolute and indefeasible, and if the person accused is prepared to give bail, right, then the court of the police as the case may be or will be bound to release him on bail. जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो देखिए, ये केस लॉ में भी वही हुआ है. If the person or the accused is prepared to give bail, then the court or either the officer has to release him on bail. Procedure: in order to apply for a bail in the case of a bailable offence, the person just needs to fill up a form, that is form number 45, which is given in the first schedule, and apply for bail, and the court will have to grant bail. That's the thing. Next, definition of non-bailable offences. अब bailable offences का opposite होगा non-bailable offences, right? तो let's see, as per section 2A of CRPC, non-bailable offence includes all those offences which are not included in bailable offence in the first schedule. Further, the first schedule in its second part at its end has defined non-bailable offence as the offences which are punishable with death, imprisonment of life और imprisonment for more than 7 years. Now just आप अगर ये punishment को देखोगे तो ही पता चल जाएगा कि ये किस टाइप के offense होंगे, right? तो there is no question of bail here, but still few cases are exceptional for this. Now examples of non-bailable offences: rape, murder, dowry death, attempt to murder and kidnapping. These all come under non-bailable offences. Now, right to be released on bail. A person accused on non-bailable offence doesn't have the right to be released on bail, but the bail can be granted at the discretion of the court. See, here it is, right? Non-bailable जो है उनको बेल सिर्फ एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, मजिस्ट्रेट या तो जज डिसाइड करेंगे कि इनको बेल दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको एक ही डर रहता है कि ये अगर बाहर गया तो क्या श्योरिटी है कि वो फिर से ट्रायल में आएगा, ये क्या श्योरिटी है कि जो गवाह प्रूफ है उनको वो कुछ धमकी या तो उनका बदल देने की कोशिश करेगा, और क्या श्योरिटी है कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा, राइट? सो दीज ऑल क्वेश्चंस अराइजेस एंड दैट्स द इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड whether to give or release him on bail or not. If a person is arrested on accusation of commission of any non-bailable offence, then the person will not be released on bail. But if there appears a reasonable ground that the person is guilty of an offence punishable with death or imprisonment of life, a person accused with an offence punishable with death or imprisonment of life can be released on bail if the person is below age of 16 years. On that ground, he can be released on bail. And another of sick woman inform further if at any stage of investigation it appears to the court that there are reasonable grounds for believing that the person has not committed a non-bailable offence, the person may be released on bail at the discretion of court on execution of a bond, right? So जहाँ कभी भी assume may be ऐसा होता है, तब person at the discretion of the court and on the execution of bond, the court may release that person on bail. Now in a case a person is accused with commission or abatement or conspiracy or attempt to commit any offence against state, or with offences affecting human body or with offences against property, may be released on bail, but the court may impose condition that it deems necessary in order to ensure that the person shall attend the court in accordance with the conditions of the bond executed, no commit any offence similar to the offence of which he is accused or suspected. Now, right to be released on bail ka continuity. In the case of trial by magistrate, if the trial of a person accused with a non-bailable offence is not concluded within period of 60 days, this also very important point. अगर 60 days के अंदर कुछ conclusion नहीं आता, then such person has to be released on bail. Now the condition for granting the bail is that the person needs to be in custody during whole period. If the bail is not granted to such a person, the reason for not granting the bail, right? अगर custody में रखना है 60 days को, तो अगर not granting the bail, the magistrate has to give it in writing, or that will be recorded. And further, if the person accused of non-bailable offence is granted bail,
right? Then because of any of the conditions mentioned above, the authority granting the bail will have to record the reason in writing. तो दोनों तरफा writing में देना पड़ेगा कि for not granting and for granting. एंटीसिपेटरी बेल, ये आपने सुना होगा, कभी भी कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं, उनका अरेस्ट होने का चांसेस हैं, तो ही कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल प्रीवियसली और पहले से ही, राइट? तो इन केस अ पर्सन इफ इज एप्रीहेंशन दैट ही माइट बी अरेस्टेड ऑन द एक्यूजेशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, he can apply to High Court of Session for bail under Section 438 of CRPC. The grant of bail will be on the discretion of the court subject to certain conditions, including conditions that the person shall make himself available for integration by police officer as when required. Interrogation जब भी बुलाया जाएगा वो हाजिर रहेंगे. Not make an inducement, threat or promise to any person so as to deter him from the disclosing any material facts to the court or any police officer, right? कोई भी गवाह प्रूफ कुछ भी हो उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा. Not leave India, that's the country को नहीं छोड़ेंगे, right? The procedure for anticipatory bail. In order to apply for the bail under Section 437 or Section 438 of CRPC, the accused is required to fill the form number 45 given in the first schedule and apply for bail. After that, it will be discretion of the court whether to grant him bail or not. पर्सनल बॉन्ड एंड कैश सिक्योरिटी, राइट? तो जो कंडीशंस बोले वो क्या क्या होता है. इन सम केसेस व्हाइल ग्रांटिंग बेल द कोर्ट डायरेक्ट्स फॉर पर्सनल बॉन्ड एज वेल एज सिक्योरिटी इन कैश. Amount of bond. Now the amount of every bond executed shall be fixed with due regard to the circumstances of the case. केस कौन सा है, किस बेस पे है, वो चीज़ें. नाउ बेल कैंसिलेशन होता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल be arrested and commit him to custody on an application filed by the complainant or the prosecution. अगर वो बेल पे छुटा हुआ बंदा अगर कुछ गलत कर रहा है या तो कंप्लेनेंट आके अगर अर्जी दाखिल करते हैं तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ये ऑर्डर दे सकते हैं. एंड दिस वे द बेल कैन बी कैंसल्ड, राइट? नाउ वाई डू यू नीड अ लॉयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, क्योंकि जब आपको अरेस्ट किया जाता है हमको इतना नॉलेज नहीं होता है एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए आम आदमी, राइट? हमको इतना नॉलेज नहीं होता है कि केस लॉ या किस सेक्शन पे आपको अरेस्ट किया गया, वेदर इट इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल, राइट? वो उस पर कुछ हम डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे और पुलिस ऑफिसर से आप पूछना भी नहीं रहता है. तो तब आपको ये लॉयर चाहिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं और जिन्हें इसका पूरा नॉलेज रखा होता है. एट दैट टाइम यू नीड ए लॉयर. सो ऑब्टेनिंग अ बेल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एन अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड हैज़ टू बी अप्रोच्ड विद द utmost care. Because upon arrest, the first step for any person should to hire services of an expert criminal lawyer. क्योंकि अगर गलत भी हो सकता है अगर आपने सही एक्शन या स्टेप नहीं लिया तो. Who can help advise and guide the accused through the process of obtaining a bail? Since a lawyer has the knowledge of the law related to each offense, the precedents operating in the field, and an understanding of surrounding circumstances of the case, hiring a lawyer becomes essential to the process of obtaining bail. And that's come to an conclusion. I hope you all got it. Please share करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, राइट? बिकॉज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत हार्ड वर्क है, सो दैट वी मेक your study, your subject or topic easy, right? Now let's make it to the conclusion. The CRPC has not given any reason regarding the basis on which classification between bailable and non-bailable offence has been made. So there is a simple arbitrary classification of the offences covered under the two categories. Hence, one can rationally infer that all heinous crime fall under the category of non-bailable offence, whereas those less serious ones fall under bailable offense. And this way we conclude our today's video. So students, friends, let's meet in the next video. Please share, please subscribe. Have a nice day. Bye.